हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे निबंध के बारे में बताएंगे। ऐसे लिखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, जिस विषय पर ऐसे लिखना हो उसका पर्याप्त ज्ञान आवश्यक है ताकि जो कुछ लिखा जाए वह प्रमाणिक हो। सेकंड, ऐसे की भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमयी होनी चाहिए। थर्ड, ऐसे में थोड़े शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों और वाक्यों का अच्छा प्रयोग रहता है। अगला है, ऐसे में विचारों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। अगला है, ऐसे लिखने से पहले उसकी आउटलाइंस रूपरेखा पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। फर्स्ट है द डॉग पर। द डॉग इज ए पेट एनिमल। इट हैज़ 4 legs. इट हैज़ 2 eyes and 2 ears. इट्स बॉडी इज स्मॉल. इट हैज़ ए शॉर्ट टेल. डॉग्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. सम आर वाइट, सम आर ब्लैक and some are brown. The dog eats bread, meat and bones. It drinks milk also. It does not eat grass. It eats the food which we eat. The dog is a very useful animal. It guards our houses. It is always alert. It is the best friend of man. It loves its master. It is used in hunting also. It is a very faithful animal. मीनिंग है, पेट मीन्स पालतू, मीट मीन्स मांस, बोन्स मीन्स हड्डियाँ, गार्ड्स मीन्स चौकीदारी करता है, अलर्ट मीन्स सावधान, हंटिंग मीन्स शिकार, फेथफुल मीन्स वफादार। नेक्स्ट है द काउ। द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल. शी हैज़ 4 legs. शी हैज़ 2 eyes, 2 ears and 2 horns. Her body is very big. She has a long tail. Cows are of different colors. Some are white, some are black, some are brown and some are spotted. The cow eats grass, straw and wild cakes. She eats green vegetables and cotton seeds also. Some people give her bread. She is a very useful animal. She gives us milk. Her milk is sweet and very useful. We make butter, ghee and curd from her milk. She gives us calves. They plow our fields. Cow dung is used as fuel. The cow is a very gentle animal. The Hindus call her mother. मीनिंग, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, हॉर्न्स मीन्स सींग, टेल मीन्स पूँछ, डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न, स्पॉटेड मीन्स चितकबरी, स्ट्रा मीन्स भूसा, वाइल्ड केक मीन्स खल, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ, कॉटन सीड्स मीन्स बिनौले, बटर मीन्स मक्खन, कर्ड मीन्स दही, काल्व्स मीन्स बछड़े, प्लो मीन्स जोतते हैं, काउ डंग मीन्स गोबर, फ्यूल मीन्स ईंधन। नेक्स्ट है माई स्कूल पर। आई रीड इन SD इंटर कॉलेज रामपुर. इट इज़ सिचुएटेड इन मोहल्ला राजद्वारा. It is a big school. Its building is double storied. There are about 30 rooms in it. All the rooms are airy. There are 2 fans in every room. There is a big library hall. There is a vast playground also. The students play their different games in the evening. The principal of my school is Sri R.A. Rohilla. He is a very gentleman. He loves all the teachers and students. There are about 30 teachers and 6 peons. All the teachers are very gentle and kind. They teach us very well. All the students obey them. The result of my school is always very good. My school is an ideal school. मीनिंग, इज सिचुएटेड मीन्स स्थित है, डबल स्टोरीड मीन्स 2 मंजिली, बास्ट मीन्स लंबे चौड़े, प्यून मीन्स चपरासी, रिजल्ट मीन्स परिणाम, आइडियल मीन्स आदर्श। नेक्स्ट है द एलिफेंट। द एलिफेंट इज ए ह्यूज एनिमल. ही हैज़ 4 long and thick legs. He has 2 small eyes and 2 big ears like fan. He has 2 long tusks. He has 1 long trunk also. His body is very big. Generally the elephant is black in color. White elephant are very rare. The elephant eats leaves of the trees. He eats bread also. He is very fond of eating sugarcane. The elephant is a very costly animal. He is an intelligent animal. He works in circus and does wonders. Some people are fond of elephants. They use him for riding. He carries heavy loads also. He is taken out in processions. In olden days he was used in war also.
मीनिंग है ह्यूज मीन्स विशाल, ट्रंक मीन्स सूंड, रेयर मीन्स कम, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, शुगर कैन मीन्स गन्ने, कॉस्टली मीन्स कीमती, इंटेलिजेंट मीन्स समझदार, बॉन्डर्स मीन्स करतब, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन, राइडिंग मीन्स सवारी, प्रोसेसन मीन्स जुलूस। नेक्स्ट है माई बेस्ट फ्रेंड। आई रीड इन क्लास 8th। सुनील इज माई बेस्ट फेलो। I have many friends, but I like Sunil very much. He is my best friend. His father is a teacher in a degree college. He lives near my house. Sunil is very simple. He wears pantaloons and shirt. In winter, he wears sweater or suit. His clothes are always neat and clean. He has a very fine nature. He is always ready to help everybody. He is always smiling. He is never angry with anybody. He gets up early in the morning. He goes for a walk daily. He is regular in his work. He works very hard, so he always stands first. He helps the weak students. He takes interest in games also. He is a good player of cricket. He respects his teachers and elders, so they all love him. He is an ideal boy. Meaning class fellow means सहपाठी, sweater means sweater, नीट एंड क्लीन मीन्स साफ सुथरे, नेचर मीन्स स्वभाव, एंग्री मीन्स नाराज, रेगुलर मीन्स नियमित, स्टैंड्स फर्स्ट मीन्स प्रथम आता है, आइडियल मीन्स आदर्श। नेक्स्ट है अ ग्रेट लीडर। देयर आर सो मैनी लीडर्स बट आई लाइक महात्मा गांधी वेरी मच। ही वाज ए लीडर एज वेल एज ए सेंट। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। He was born on October 2, 1869 at Porbandar in Gujarat. His father Karamchand Gandhi was a Diwan of Rajkot. He was an ordinary student. After getting education in India, he went to England for higher education. He became a barrister. Then he returned to India. He started his law practice at Bombay High Court, but he was not successful in India. He fought a battle for freedom. He joined Congress party. He started Satyagrah and non-cooperation movement. He went to jail many times. Under his leadership, India became free on 15th August 1947. He lived a very simple life. He worked for Harjans, but he was shot dead on January 30, 1948. We call him Bapu. मीनिंग सेंट मीन्स संत, बैटल फॉर फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता की लड़ाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मीन्स असहयोग आंदोलन, शॉट डेड मीन्स गोली मारकर हत्या कर दी। नेक्स्ट है माई बेस्ट टीचर। आई रीड इन SD इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। देयर आर अबाउट 30 टीचर्स इन माई कॉलेज। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम बट Sri S.N. Sharma I like most. He is my best teacher. Sri S.N. Sharma is a young man of about 40. He is MA, M.Ed. He teaches us English in 6th period. His mother of teaching is very simple and interesting. He explains everything well. He is always ready to help every student. So all the students love him and respect him. Sri S.N. Sharma is a man of simple living and high thinking. He wears white shirt and pantaloons. In winter he wears suit. He is always well dressed. He is soft spoken, regular and punctual in the college. He has an attractive personality. Meaning method of teaching means पढ़ाने का ढंग, explain means समझाते हैं, simple living and high thinking means सादा जीवन उच्च विचार, वेल ड्रेस्ड मीन्स अच्छी प्रकार कपड़े पहनना, सॉफ्ट स्पोकन मीन्स मृदुभाषी, रेगुलर मीन्स नियमित, पंक्चुअल मीन्स ठीक समय पर आने वाला, अट्रैक्टिव मीन्स पर्सनालिटी आकर्षक व्यक्तित्व। नेक्स्ट है द पोस्टमैन। द पोस्टमैन इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। ही इज ए लो पेड सर्वेंट। वी कैन सी हिम डेली इन द स्ट्रीट्स एक्सेप्ट ऑन संडे. He goes to the post office early in the morning. He returns late in the evening. He wears a khaki uniform. Some postmen have a cap or red turban on their heads. He has a bag. He keeps parcels, money orders and letters in it. The work of a postman is very difficult. He delivers letters, parcels and money order door to door. He does not care of sun or shower. He comes daily and takes very few leaves. The postman is a very honest man. He is less educated. He can read addresses in Hindi, English and Urdu.
वी शुड लव हिम मीनिंग गवर्नमेंट मीन्स सरकारी, लो पेड मीन्स कम वेतन वाला, स्ट्रीट मीन्स सड़कें मोहल्ले, यूनिफॉर्म मीन्स वर्दी टर्बन पगड़ी, डिलीवर्स मीन्स बांटता है, सन मीन्स धूप, शॉवर मीन्स बारिश, लीव्स मीन्स छुट्टियाँ, लेस मीन्स कम, एजुकेटेड मीन्स शिक्षित, एड्रेसेस मीन्स पते। नेक्स्ट है ए फार्मर। A farmer lives in a village. About 60% population of India lives in the village. Most of them are farmers. They plow fields and sow seeds in them. They grow food grains for us, so they are very important people. An Indian farmer lives a very hard life. He gets up early in the morning, then he goes to his field and works hard. He plow them and sow seeds. He water them. Sometimes he goes to his field in the night also. At noon he does not come home. He takes his lunch in the field. He returns in the evening. An Indian farmer lives in an ordinary house. He wears very ordinary clothes. He wears dhoti and kurta. He eats ordinary food. His whole life is very simple. By growing food grain, he serves the country, so we should love him. मीनिंग पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, सो मीन्स बोते हैं, ग्रो मीन्स उगाते हैं, फूड ग्रेन्स मीन्स अनाज, प्लो मीन्स जोतता है, वाटर्स मीन्स सींचता है, लंच मीन्स दोपहर का भोजन, सर्फ मीन्स सेवा करता है। नेक्स्ट है द होली। होली इज ए फेस्टिवल ऑफ हिंदूज. इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च. दिस इज आल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. ए डे बिफोर इन द नाइट द पीपल सेट होली ऑन फायर. दे beat drums with joy. Next day in the morning they throw colored water on the other people. They rub gulal on their faces. In the evening the people and children wear new clothes. They meet one another with love. They embrace one another. The children go to fair. मीनिंग है इज सेलिब्रेटेड मीन्स मनाया जाता है, सेट ऑन फायर मीन्स आग लगाते हैं, बीट मीन्स पीटते हैं, ड्रम्स मीन्स ढोल, थ्रो मीन्स फेंकते हैं, कलर्ड वाटर मीन्स रंग का पानी, रब मीन्स मलते हैं, एम्ब्रेंस मीन्स गले मिलते हैं, फेयर मीन्स मेला। नेक्स्ट है आ हॉकी मैच। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग ऑल गेम्स बट हॉकी इज माई फेवरेट गेम्स. ऑन लास्ट संडे ए हॉकी match was played between our school team and DAV public school team. It was played on our ground. It was the captain of our team, Mr. Khan, was the captain of DAV public school team. Mr. PK Sharma was the referee. The match began at 4 p.m. It was slow in the beginning. No team could score a goal by interval. After the interval the match became interesting. Both the teams played well. There were only 10 minutes left. Now our forward players played very well. They soon scored 6 goals. The other team tried hard but it could do nothing. The referee gave a long whistle. The match was over. Thus we won the match by 6 goals to nil. मीनिंग फॉन्ड ऑफ, शौकीन, फेवरेट मीन्स प्रिय, स्लो मीन्स धीमा, स्कोर मीन्स बनाना, फॉरवर्ड मीन्स प्लेयर, फॉरवर्ड प्लेयर मीन्स आगे खेलने वाले खिलाड़ी, विसल मीन्स सीटी, ओवर मीन्स समाप्त। नेक्स्ट है द दिवाली। दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ द हिंदू. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15th day ऑफ हिंदी मंथ कार्तिक. It is celebrated on honor of Lord Ram. On this day, Lord Ram returned to Ayodhya after 14 years of exile. On this day, the people clean and whitewash their houses. They decorate them. Then in the night, they light the earthen lamps on the houses and shops. There are rows of earthen lamps and electric bulbs. They look very beautiful. The people worship goddess Lakshmi. The children play with crackers. Sweets are distributed among relatives and friends. All people enjoy this festival. मीनिंग फेस्टिवल मीन्स त्यौहार, इज सेलिब्रेटेड मीन्स मनाया जाता है, ऑनर मीन्स सम्मान, एग्जाइल मीन्स वनवास, वाइट वाश मीन्स सफ़ेदी कराना, डेकोरेट मीन्स सजाना, लाइट मीन्स जलाते हैं, अर्थन लैम्प मीन्स मिट्टी के दिए, रो मीन्स कतारें, वर्शिप मीन्स पूजा करते हैं, क्रैकर्स मीन्स पटाखे, डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स बांटी जाती है।
बच्चों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारे भारत के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक गांव में ये वीडियो पहुंच सके, इसलिए आप इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरी मेहनत का भी ध्यान दीजिए। मैं मेहनत बराबर कर रहा हूँ आप ही लोगों के लिए। तो मैं इसमें अकाउंट नंबर भी दे रहा हूँ, जो गुरुदक्षिणा स्वरूप आप दे सकते हैं वो मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। थैंक्स। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।